नमस्कार। संसद भवन का ये भव्य परिसर जहाँ पर और ये केंद्रीय कक्ष जहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अनुसार वर्ष के पहले सत्र यानी बजट सत्र के आरंभ में सभा के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे। The President's address to both houses of Parliament is the statement of the government's policy and is drafted by the government. This, the first session of the year, is the budget session, which will be held in 3 phases this year because of the elections being held in 6 states, and also because of the committee system that has been adopted from last year. Parliament House is one of the most magnificent buildings in New Delhi, which has one of the brightest clusters of architectural gems possessed by any country in the world. The building, which we shall see in a moment, was designed by the 2 famous architects who were responsible for the planning and construction of New Delhi, Sir Edmund Lutyens and Sir Herbert Baker. As we await the arrival of the President, this, his bodyguard, this band of magnificent men on their splendid steeds, which was raised in 1771, almost 200 years ago, by Warren Hastings. President of India, Dr. Shankar Dayal Sharma, accompanied by the Secretary to the President and the Military Secretary. The national salute. Escorting him up the steps are the Speaker of the Lok Sabha, the Prime Minister, the Vice President, the Secretaries of the Lok Sabha and the Rajya Sabha, and other dignitaries. The President being led towards the Central Hall in the traditional procession, which is in a double file. And as the procession moves towards the Central Hall, let me tell you a bit about this historical hall where the East Indian Constitution was framed and the transfer of power on the 15th of August 1947 from British to Indian hands took place. The Central Hall was originally the library of the erstwhile Central Legislative Assembly and the Council of States.
In 1946, it was converted and refurnished into the Constituent Assembly Hall. The Constituent Assembly met there from December 9, 1946 to January 24, 1950. This year, the budget session will be in 3 phases. The first one, which will end tomorrow, will be the shortest, where the extension of the Jammu and Kashmir bill will be tabled for the President's rule to be extended in Jammu and Kashmir. The Union budget for 95-96 will be presented to the Lok Sabha on the 15th of March. And the railway budget on the 14th of March. Then's a 1-month intercession before the beginning of the final phase of the budget session. पिछले वर्ष से भारतीय संसदीय लोकतंत्र में समिति प्रणाली का आरंभ हुआ। सदन में चर्चा को अधिक सार्थक बनाने के लिए पिछले वर्ष स्थापित की गई स्थायी समितियों यानी स्टैंडिंग कमिटीज़ में ब्यौरेवार चर्चा होती है और पिछली वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजट अधिवेशन लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद फिर शुरू होगा। The President, Dr. Shankar Dayal Sharma, and the Vice President, Dr. K.R. Narayanan, being led to the dais. माननीय सदस्यगण, संसद के इस सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वर्ष आपको संबोधित करते हुए मुझे यह महसूस हो रहा है कि पिछले वर्ष की हमारी आशावादिता और विश्वास सही सिद्ध हुए हैं। हमारी परिकल्पनाएं काफ़ी हद तक साकार हुई हैं और अब यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि सरकार की नई आर्थिक और अन्य नीतियों के फलस्वरूप देश में अपेक्षित बदलाव आने लगा है। जनता ने सामाजिक स्थिरता के प्रति अपना विश्वास खुलकर व्यक्त किया है। राजनीतिक दलों ने भी लोकतंत्र को तथा विधि सम्मत शासन जैसे मूलभूत मूल्यों को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए अपना योगदान दिया है। हमारे देश ने विश्व में अपनी स्थिति को बेहतर बनाया है तथा अब हमारी अर्थव्यवस्था संसार में तेजी से विकसित हो रही एक अर्थव्यवस्था है और इस रूप में स्पष्ट उभर कर सामने आई है। वर्ष 1994-95 में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रही। देश में कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ तथा हिंसा की घटनाएं भी अपेक्षाकृत कम रहीं। गोवा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। सरकार सतर्क रहने के लिए कृत संकल्प है
विशेष रूप से देश की एकता तथा अखंडता के लिए संकट पैदा करने वाली अलगाववादी तथा सांप्रदायिक ताकतों के संबंध में। अयोध्या मसले के बारे में एक उल्लेखनीय बात यह है कि उच्चतम न्यायालय को जो मामला विचार के लिए भेजा गया था उस पर उसने अपना निर्णय दे दिया है। न्यायालय ने अधिग्रहण अधिनियम की वैधता को उचित ठहराया है, किंतु निर्णयाधीन वादों के उपशमन से संबंधित उपबंधों का समर्थन नहीं किया है। विवादास्पद क्षेत्र अब केंद्र सरकार के अधिकार में है, जिसे पुनः प्रवर्तित वादों का निपटान होने तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए अब कानूनी रिसीवर के रूप में कार्य करना है। न्यायालय के निर्णय का पालन करना अनिवार्य है। इस निर्णय में विवाद को बातचीत द्वारा सुलझाने की संभावना को भी स्वीकार किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सुधरे हुए वातावरण में इस विवाद का स्थायी समाधान हो जाए और हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि सांप्रदायिकता के कारण राजनीति दूषित न होने पाए। जम्मू और कश्मीर के मामले के लिए प्रधानमंत्री के अधीन एक अलग विभाग का गठन किया गया है। राज्य में विकास तथा आर्थिक कार्यकलापों की गति तेज करने के जोरदार प्रयास किए गए हैं। सरकार ने राज्य के लिए पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित की है और इसकी विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित साधन मुहैया कराने के लिए यह नियमित रूप से इसकी ज़रूरतों का आकलन करेगी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित की जा रही हैं तथा मतदाताओं की सूची संशोधित करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग ने आरंभ कर दिया है। उग्रवादियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई तेजी से चल रही है। उग्रवादियों द्वारा अमरनाथ यात्रा में व्यवधान डालने के प्रयासों को विफल करने में प्रशासन सफल रहा है। विकट परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बल संयम से काम ले रहे हैं तथा स्थानीय लोगों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील हैं। राजनयिकों और सांसदों के शिष्टमंडलों ने राज्य का दौरा किया और जनता के विभिन्न वर्गों से खुलकर बातचीत की। इन सतत और स्वच्छ प्रयासों से सर्वत्र विश्वास की भावना पैदा हुई है। उत्तर पूर्व में विद्रोही गतिविधियों से दृढ़तापूर्वक निपटने की अपनी नीति पर सरकार पूरी तरह अमल कर रही है। साथ ही इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है कि इन विघटनकारी तत्वों को हिंसा का रास्ता छोड़कर राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मिजोरम की सरकार ने हमार पीपल्स कन्वेंशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। असम में भी इसी प्रकार उल्फा उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। सितंबर 1994 में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का प्रावधान है। इस करार के प्रावधानों को शामिल करते हुए बिहार विधानसभा ने एक नया विधेयक पारित किया है। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चल रहे आंदोलनों से उभरे मसलों के प्रति सरकार सचेत है और उसका विश्वास है कि सभी संबंधित पक्षों द्वारा धैर्यपूर्वक और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से काम करने पर समस्या का सर्वमान्य हल निश्चित निकलेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपना कार्य निष्ठापूर्वक कर रहा है। सरकार मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की अपनी नीति के प्रति कटिबद्ध है। आर्थिक सुधारों के कारण अर्थव्यवस्था में बहुत प्रगति हुई है। वर्ष 1994-95 के दौरान स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में 5.3% की वृद्धि होने की आशा है, जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 4.3% थी। 1994-95 की पहली छमाही में उत्पादन में 8% की बढ़ोतरी हुई है, जो औद्योगिक पुनर्जीवन का संकेत है। विदेशी मुद्रा का भंडार 31 मार्च 94 को $15.1 बिलियन था, किंतु यह जनवरी 1995 के अंतिम सप्ताह में बढ़कर $19 बिलियन हो गया। सरकार नियत समय से पहले ही लगभग $1.1 बिलियन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को लौटाने की स्थिति में थी। औद्योगिक क्षेत्र के पुनः सुलभ स्थिति में आ जाने से आयात
23.9% तक बढ़ गया है। निर्यात में भी डॉलर के रूप में 16.9% की वृद्धि हुई है। रुपये का मूल्य स्थिर रहा और उसे चालू खाते में परिवर्तनीय बना दिया गया। सरकार कीमतों में वृद्धि से चिंतित है। विशेष रूप से सार्वजनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से कीमतों की स्थिति पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी न होने देने के उपाय किए जा रहे हैं। कुछ वस्तुएं जैसे चीनी और खाद्य तेल की कीमतें मुख्य रूप से अपर्याप्त घरेलू उत्पादन के कारण बढ़ी हैं। विदेशी मुद्रा की संतोषजनक स्थिति के कारण अधिक आयात करने से कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण रखने में सहायता मिली है। भारतीय खाद्य निगम के पास मौजूद अनाज के सार्वजनिक स्टॉक में से गेहूं व चावल की खुले बाजार में भी बिक्री की गई है। आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं पुनर्व्यवस्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दिशा में आगे और प्रयास किए जाएंगे। देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए किसानों को लाभप्रद न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कराए जाते रहेंगे। जहाँ तक आवश्यक वस्तुओं का संबंध है, सरकार पर्याप्त उपलब्धता और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगी, जिसमें गरीबों को अतिरिक्त रियायतें दी जाएंगी। उद्योग को व्यापक रूप से नियंत्रणों से मुक्त करने का उद्यमियों ने सराहनीय स्वागत किया है। जुलाई 1991 से अब तक 17,000 से भी अधिक निवेश संबंधी मंतव्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल 3,50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक तक निवेश होगा तथा इससे 34 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। लगभग 20% निवेश संबंधी मंतव्यों को अब तक कार्यान्वित किया जा चुका है और अन्य 20% प्रस्ताव कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनसे 14 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है। हमारी प्रमुख वित्तीय संस्थाओं ने 1994 में अप्रैल से दिसंबर के बीच पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 39% अधिक राशि का संवितरण किया। इस दिशा में देश में जो पहल की गई उससे विदेशी निवेशकों और सहयोगकर्ताओं में भी निवेश के प्रति रुचि जागृत हुई है। विदेशी निवेशकों ने भारतीय साझेदारों के कौशल और संसाधनों में जो विश्वास व्यक्त किया है वह इसी बात से स्पष्ट है कि विदेशियों ने संयुक्त उद्योगों में 80% तक सीधे पूंजी निवेश किया है। 1991 से आज तक प्रत्यक्ष विदेशी संचयी निवेशों की अनुमोदित राशि 20,000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गई है। इसमें से अधिकांश राशि का निवेश लंबी अवधि वाली आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं में किया गया है। अन्य क्षेत्रों में भी सुधार लाने में और विनियोगों से मुक्त देने की सरकार की नीति जारी रही। नई औषधि नीति तथा दूरसंचार नीति इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। लघु उद्योग क्षेत्र हमारी औद्योगिक संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका उत्पादन स्तर 2,41,648 करोड़ रुपये है, जिससे 1,39,00,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। पिछले वर्ष इसमें 7.1% की वृद्धि हुई। इस क्षेत्र द्वारा निर्यात की राशि लगभग 24,000 करोड़ रुपये है, जो कुल निर्यात का लगभग 35% है। इस क्षेत्र की क्रेडिट संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इसमें से 85 जिलों में जहां लघु उद्योग क्षेत्र इकाइयां संकेंद्रित हैं, सिंगल विंडो स्कीम को अपनाना और विशेष बैंक शाखाओं की स्थापना करना शामिल है। सरकार क्षेत्र को प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए उदारतापूर्वक सहायता देकर और अधिक बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने खादी और ग्रामीण उद्योग को सुधारने और पुनर्जीवित करने के लिए एक कार्ययोजना की मंजूरी दी है, जिससे 20 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिलेगा। एक विशेष रोजगार कार्यक्रम 50 चुने हुए जिलों में प्रारंभ किया जाएगा तथा देश के 125 ब्लॉकों में गहन विकास को बढ़ावा दिया गया। शिक्षित युवकों को रोजगार दिलाना सरकार की एक मुख्य प्राथमिकता है।
2 अक्टूबर 1993 से प्रारंभ हुई प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। अब इस वर्ष इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रारंभ कर दिया गया है। चालू वर्ष में इस कार्यक्रम से 2,30,000 शिक्षित युवकों को लाभ पहुंचेगा, जबकि पिछले वर्ष इससे 31,797 युवा लाभान्वित हुए थे। बैंकों ने 31 दिसंबर 1994 तक 69,483 उद्यमियों को ऋण मंजूर किए। सरकार 7 लाख युवकों को ऋण प्रदान करेगी, जिसमें 8वीं योजना की अवधि समाप्त होने से पूर्ण रोजगार के 10 लाख अवसर प्राप्त होंगे। पोषक तत्वों के रूप में नाइट्रोजेनिक उर्वरकों का उत्पादन 1994-95 में 78,20,000 मीट्रिक टन तक पहुंचने की आशा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पोषक तत्व के रूप में फॉस्फेटिक उर्वरक का उत्पादन, जो 1993-94 में 18,50,000 मीट्रिक टन था, उसके 1994-95 में बढ़कर 23 लाख मीट्रिक टन तक हो जाने की संभावना है। सरकार देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। 5 नए संयंत्रों में शीघ्र ही उत्पादन आरंभ होने वाला है। सरकार कृषि क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले वर्ष 18 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन था, जिसके चालू वर्ष में बढ़कर 18 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन होने की आशा है। 93-94 में 15,100 करोड़ रुपये की कृषि ऋण का संवितरण किया गया। 94-95 में इस ऋण को 16,700 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। 94-95 में 20,70,000 हेक्टेयर भूमि के और सिंचित होने जाने की संभावना है, जिससे कुल सिंचित क्षेत्र बढ़कर 8 करोड़ 78 लाख 20,000 हेक्टेयर हो जाएगा। अनुमान है कि 94-95 में उर्वरक पोषक तत्वों की खपत 1 करोड़ 23 लाख मीट्रिक टन होगी, जो कि 1993-94 की खपत की तुलना में 10% अधिक है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बागवानी और मत्स्य उद्योग जैसे व्यवसायों से अधिक आय अर्जित कराने के लिए विविध योजनाओं को बढ़ावा दे रही है। इसलिए वर्तमान पंचवर्षीय योजना में बागवानी के लिए 1,000 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जबकि पिछली पंचवर्षीय योजना में इसके लिए केवल 24 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। 93-94 में मत्स्य उत्पादन 46,80,000 मीट्रिक टन था, जो अपने आप में अब तक का एक रिकॉर्ड है। 94-95 में इसका उत्पादन 47,50,000 मीट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना है। पिछले 5 वर्षों में कुछ उत्पादों के निर्यात में 3 गुना वृद्धि हुई है। सरकार के विकास संबंधी समस्त प्रयासों का केंद्र बिंदु ग्रामीण विकास है। सुस्पष्ट लक्षित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार की रोजगार नीति का आधार स्वरूप है। पिछले 3 वर्षों में ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए केंद्रीय योजना के आवंटन में निरंतर वृद्धि हुई है। चालू वर्ष में इस कार्य के लिए 7,010 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो हमारी योजना के इतिहास में अब तक आवंटित सर्वाधिक राशि है। इतनी बड़ी राशि के परिव्यय से अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध होंगे तथा बड़े पैमाने पर संस्थागत वित्त जुटाकर स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए होंगे। जवाहर रोजगार योजना एवं रोजगार आश्वासन योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 5,055 करोड़ रुपये का प्रावधान है। चालू वर्ष में रोजगार आश्वासन योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। चालू वर्ष में इस कार्यक्रम को बढ़ाकर देश के सबसे अधिक पिछले 2,279 क्षेत्रों में प्रारंभ कर दिया गया, जबकि पहले यह केवल 1,778 ब्लॉकों में था। जवाहर रोजगार योजना के अतिरिक्त एक गहन रोजगार योजना कार्यक्रम लंबे अरसे से 120 पिछले क्षेत्रों में चल रहा है। इन सभी योजनाओं से चालू वर्ष के दौरान रोजगार के 147 करोड़ श्रम दिवस उपलब्ध होने की संभावना है। परिसंपत्ति एवं ऋण पर आधारित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस वर्ष से लगभग 20 लाख करीब ग्रामीण परिवार स्वरोजगार पा सकेंगे। जिला और ब्लॉक स्तर की ऋण योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित किया जा रहा है तथा प्रति परिवार औसत निवेश को बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जा रहा है। 1,098 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये का संस्थागत ऋण जुटाया गया है। ये कार्यक्रम ग्रामीण शिक्षित युवा वर्ग की आवश्यकताओं को अधिकाधिक पूरा करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास संबंधी कार्यक्रम का विस्तार सभी जिलों में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से महिला ग्रुपों को अब तक दी जाने वाली 15,000 रुपये की राशि के स्थान पर 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी।
ताकि वे आर्थिक क्रियाकलाप शुरू कर सकें और साक्षरता एवं परिवार कल्याण जैसे कार्यों के रूपों में करने की प्रवृत्ति विकसित हो सके। इससे महिलाओं को और अधिक सक्षम बनाया जा सकेगा। अप्रैल 1994 तक निर्धारित अवधि में सभी राज्यों ने अपने मौजूदा पंचायती राज कानूनों को संशोधित कर लिया है या नए कानून बना लिए हैं। अब यह आवश्यक है कि सभी जगह चुनाव कराए जाएं और सभी स्तरों पर पंचायतों का गठन किया जाए। कुछ राज्यों में इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पंचायतों को वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। मैं सभी राज्यों का आह्वान करता हूं कि वे पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया अविलंब पूरी करें। सरकार शहरों में गरीबी की समस्याओं को निपटने के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम की आवश्यकता अनुभव करती है। इस कार्यक्रम में शहरों के इसी प्रकार के कूड़ा करकटों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया जाना भी शामिल है। इस कार्यक्रम को तैयार करने और कार्यान्वित करने में स्वयंसेवी संगठनों का भी भरपूर सहयोग लिया जाएगा। सरकार देश के 50,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले श्रेणी 2 के 345 शहरों के लिए एक योजना बनाने पर विचार कर रही है। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के प्रति राज्यों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है। दिशा में राज्यों के प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार ने इस वर्ष राज्यों को 237 करोड़ 85 लाख रुपये आवंटित किए हैं। पिछले वर्ष सफाई कर्मचारियों को इस कार्य से मुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास संबंधी कार्यों की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह आयोग प्रशिक्षण देने, अधिकाधिक संस्थागत वित्त जुटाने जैसे पुनर्वास कार्यक्रम चलाएगा तथा यूनिट लागतों के परिवर्धन की आवश्यकता पर विचार करेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से मार्जिन राशि और ऋणों का प्रावधान करके गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने तथा उनका विस्तार करने के प्रयास तेज कर दिए गए। इस क्रम में इसकी अधिकृत शेयर पूंजी 125 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दी गई है। भारत सरकार ने सितंबर 1993 में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण प्रदान करने की दिशा में पहला कदम उठाया था, जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका पूरा लाभ अन्य पिछड़े वर्गों को मिले, सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को अपेक्षित मानकों में ढील दी है। इस प्रकार की सुविधा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उपलब्ध थी। परिणाम स्वरूप 1994 की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अन्य पिछड़े वर्गों के 1873 अतिरिक्त उम्मीदवारों ने अर्हता प्राप्त की। सरकार ने आयु में 3 वर्ष की छूट देने के नियम को लागू करने तथा इस परीक्षा के लिए 3 अतिरिक्त प्रयासों की अनुमति देने का भी निर्णय लिया है। अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास के क्रियाकलापों को बढ़ावा देने तथा उनके तकनीकी ज्ञान एवं उद्यम कौशल के उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने सितंबर 1994 से कार्य आरंभ कर दिया है। चालू वर्ष में मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान को 25 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। प्रतिष्ठान ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में और ऐसे स्लमों में जहां साक्षरता कम है लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल खोलेगा। सरकार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा विकलांगों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ नए उपायों पर विचार कर रही है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 339 के अंतर्गत एक आयोग के गठन पर विचार किया जा रहा है, जो अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के लिए किए जा रहे जनजातीय उपयोजनों तथा अन्य उपायों की समीक्षा करेगा, ताकि इनकी कार्यनीतियों में सुधार लाया जा सके। शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा रोजगार नियोजन जैसे क्षेत्रों में विकलांगों को समान अवसर प्रदान करने के लिए कानून बनाए जाएं तथा मंदबुद्धि व्यक्तियों के कल्याण और सुरक्षा के लिए न्यास बनाया जा सके। महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों में सरकार का दृष्टिकोण ऐसी अनुकूल नीतियां तैयार करने का रहा है जिनमें योजना का केंद्र बिंदु महिलाएं एवं बच्चे और विशेषकर बालिकाएं हों। इस योजना में महिलाओं को सक्षम बनाने, समर्थन सेवाएं प्रदान करने तथा पोषण कार्यक्रम चलाने को प्राथमिकता दी गई है।
इस बारे में उल्लेखनीय उपलब्धियों में राष्ट्रीय पोषण नीति को अपनाना, राष्ट्रीय पोषण परिषद और राष्ट्रीय शिशु गृह निधि की स्थापना करना तथा महिला समृद्धि योजना का कार्यान्वयन शामिल है। महिला समृद्धि योजना को काफ़ी लोकप्रियता मिली है। दिसंबर 1994 तक 72 लाख खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल राशि 65 करोड़ 90 लाख थी। 8वीं योजना के अंत तक राष्ट्रीय शिशु गृह निधि से सेवारत महिलाओं और बीमार माताओं को 45,000 बच्चों की दिन में देखभाल करने के लिए 1800 अतिरिक्त शिशु गृह खोलने में सहायता मिलेगी। पूरे देश में एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम लागू करने के लिए 1995-96 के दौरान प्रथम उपाय के रूप में सामुदायिक पोषण केंद्रों के माध्यम से 1 लाख गांवों में 1000 नए ब्लॉकों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है। सन 2000 तक सभी को शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार शिक्षा पर खर्च की राशि को उत्तरोत्तर बढ़ाएगी, ताकि सकल घरेलू उत्पाद GDP के 7% के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। देश में इस समय 312 जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें 9 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 5 करोड़ शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पूर्ण साक्षरता अभियानों के प्रारंभ होने से अब यह लगने लगा है कि सार्वभौम और साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सन 2000 तक जोखिमपूर्ण उद्योगों में सभी प्रकार के रोजगारों में क्रमिक रूप में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सरकार कृतसंकल्प है। शिक्षा, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल स्वास्थ्य तथा श्रम जैसे विकास प्रशासनों के प्रमुख क्षेत्रों में की कार्रवाई को समन्वित करने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इससे ऐसे एकीकृत कार्यक्रम बनाए जा सकेंगे जिनसे बालकों को रोजगार से निकालकर निश्चित रूप से स्कूलों में दाखिल कराने के लिए अनुकूल स्थितियां बन सकें। आज हम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को व्यावहारिक रूप से लागू करने के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में हैं। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 तथा संवर्धित उपग्रहण प्रक्षेपण वाहन ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLVD-4 से स्पष्ट हो गया है हम ध्रुवीय तथा पृथ्वी की समवर्ती कक्षाओं में उपग्रह स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। इनसेट श्रेणी के हमारे उपग्रह दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण, मौसम तथा विनाश संबंधी चेतावनी जैसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस श्रृंखला में आगामी उपग्रह इनसेट 2C तथा दूर संवेदी सीरीज उपग्रह IRSAC 1995 में छोड़े जाने की योजना है। यह हर्ष की बात है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा केंद्र की स्थापना करने के लिए भारत का चयन किया गया है। अपनी भाषा में कार्यक्रम देखने की जनअभिलाषा पूरी करने के उद्देश्य से दूरदर्शन ने अपनी उपग्रह सेवा में अनुकूल परिवर्तन कर लिया है। 14 चैनलों में से 11 उपग्रह चैनल अब केवल क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों के लिए हैं। देश परमाणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करने का लगातार प्रयास कर रहा है। भारत में डिज़ाइन किया गया एवं बना 6ठा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर तैयार हो गया है, जो ककरापार परमाणु शक्ति स्टेशन की दूसरी इकाई है। इसने इस वर्ष 8 जनवरी को काम करना प्रारंभ कर दिया है। इस प्रकार देश ने इस उन्नत प्रौद्योगिकी ने एक बार फिर आत्मनिर्भरता का प्रमाण दिया है। नाभिकीय प्रौद्योगिकी के प्रयोग से और भी उपलब्धियां हुई हैं, जैसे नाभिकीय ग्रेड ग्रेफाइट का उत्पादन, मेडिकल लेसर का निर्माण तथा समानांतर सुपर कंप्यूटर का विकास आदि। हमारी सशस्त्र सेनाएं हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तो समुद्री हितों की रक्षा करने में सतर्क रही हैं। उन्होंने जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में विद्रोह को दबाने के कार्य में बड़ा योगदान दिया है। हमारी स्थल सेना ने भारतीय वायुसेना और नौसेना के कौशलपूर्ण सहयोग से सोमालिया में शांति बनाए रखने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से युद्धरत सेनाओं के पीछे हटाने में जो सफलता प्राप्त की है, उसकी विदेशों में भी भूरी सराहना हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को
बनाए रखने की दिशा में पिछला वर्ष संतोषजनक रहा। पूरे विश्व में मौजूदा मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आई है और हमारे उद्देश्यों एवं नीतियों के प्रति नई समझ पैदा हुई है। संयुक्त राष्ट्र इस वर्ष अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए हमारा निरंतर समर्थन रहा है, क्योंकि यह मानवता के समान लक्ष्यों की प्राप्ति का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जो पहल की है, उसमें विश्व संगठन का लोकतांत्रिकरण तथा समसामयिक वास्तविकताओं को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता बढ़ाना शामिल है। हमने शीत युद्ध के बाद की विश्व सुरक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए चौथे विशेष निरस्त्रीकरण सत्र का प्रस्ताव रखा है। हम अगले वर्ष अप्रैल में अपने देश में अगला सार्क सम्मेलन आयोजित करेंगे तथा क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए अपने सार्क सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे। पिछले वर्ष हमने पड़ोसी देशों के साथ परस्पर घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की ओर निरंतर ध्यान दिया है। हम उन नई सरकारों का स्वागत करते हैं जो श्रीलंका तथा नेपाल में बहुदलीय लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से सत्ता में आई हैं। हम उनके साथ तथा अन्य सभी पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध अधिकाधिक सहयोग चाहते हैं। परंतु खेद की बात है कि पाकिस्तान अभी भी भारत के साथ टकराव के मार्ग पर चल रहा है और हमारे अंदरूनी मामलों में उसका अनुचित हस्तक्षेप जारी है। हमने दोनों देशों के बीच अनसुलझे मुद्दों को शिमला समझौते के अनुसार सुलझाने की दिशा में बार बार पहल की है। बातचीत के लिए हमारी पेशकश अभी भी बरकरार है। हमें खेद है इस बीच पाकिस्तान ने बम्बई में अपना कार्यालय तथा कराची में भारतीय महाकांसुलावास बंद करने के एक तरफा कदम उठाए। ऐसा करके उसने लोगों को कि आपसी संपर्क और वाणिज्यिक, सांस्कृतिक तथा अन्य संबंधों में और अधिक रुकावटें पैदा की हैं। सरकार ने अपने पुराने और नए विदेशी मित्रों के साथ पारस्परिक समझ और सहयोग सुदृढ़ करने के प्रयास किए। बल्गेरिया और रोमानिया की मेरी राजकीय यात्राओं से वे घनिष्ठ संबंध फिर से ताज़े हुए हैं, जो भारत तथा पूर्वी यूरोप के देशों के मध्य अनेक दशकों से चल रहे हैं। हमारे उपराष्ट्रपति ने ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और चीन की यात्राएं की और इन योजनाओं से उन देशों के साथ हमारे संबंध और अधिक मजबूत हुए। प्रधानमंत्री की ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वियतनाम और सिंगापुर की यात्राओं से इन देशों के साथ हमारे संबंधों को हर क्षेत्र में बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। अमेरिका की यात्रा से दोनों देशों के महत्वपूर्ण मसलों को आपस में अधिक अच्छी तरह से समझा जा सकता है और इससे द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ा है। इस यात्रा से भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में ही परस्पर आदान प्रदान को फिर से आगे बढ़ाने का आधार मिला है। प्रधानमंत्री की ब्रिटेन, वियतनाम तथा सिंगापुर की यात्राएं इस बात का प्रमाण हैं कि हम अपने यूरोपीय तथा एशियाई सहयोगियों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के इच्छुक हैं। पिछले वर्ष भारत रूस संबंध अधिक प्रगाढ़ हुए हैं और उनमें गति आई है। राष्ट्रपति येल्सिन और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित बहुवादी राज्यों के हितों की सुरक्षा संबंधी मास्को घोषणा दोनों देशों के संबंधों में एक उल्लेखनीय योगदान है। हमने हाल ही में इस वर्ष के अपने गणतंत्र दिवस समारोह में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत किया। उनकी यात्रा से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक नई शुरुआत हुई है। हमारे आर्थिक प्रबंधों की सफलता, जिस पर हमारे देशवासियों की आर्थिक समृद्धि निर्भर करती है, तथा आर्थिक उदारीकरण के परिणाम स्वरूप लाभकारी परिवर्तनों को विदेशों में कारगर ढंग से प्रस्तुत करने के हमारे प्रयासों की विदेशों में बहुत ही अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है। इन नीतियों के कारण देश में जो गतिशीलता आई है उसे बनाए रखना होगा और इस सुनिश्चित करना होगा जो लाभ मिलने शुरू हैं उन्हें हम गंवा न दें। हमारी अर्थव्यवस्था के प्रति निवेशकर्ताओं का आर्थिक सुधारों के प्रति जनता, विशेष रूप से विशेषाधिकारहीन जनता का विश्वास दृढ़ करने के लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। संसद में बहस के दौरान आपके शब्द विचार इन दोनों बातों को प्रतिफलित और प्रभावित भी करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इन उद्देश्यों के प्रति उचित ध्यान देते हुए अपने काम में अग्रसर होंगे। कार्यक्रम के लिए आपका आह्वान करते हुए
मैं आपकी सफलता की हार्दिक कामना करता हूं। जय हिंद। Honorable members, I welcome you to this session of Parliament. As I stand to address you this year, I note that the optimism and self-assurance evident last year has been vindicated. The projections made have been fulfilled in substantial measure, and it can be said with confidence now that the country has made the turnaround initiated by the new economic and other policies of the government. The people have responded handsomely by reasserting their faith in social stability. Political parties have also contributed to strengthening democracy and fundamental values such as the rule of law. Our country has improved its standing in the global community and now stands poised to become one of the rapidly growing economies of the world. The law and order situation continued to be under control in 1994-95. There was no major communal riot in the country and incidents of violence were fewer. Polls in Goa, Sikkim, Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra have been peaceful. Government is determined to be watchful, particularly in respect of the secessionists and communal forces that pose a threat to the unity and integrity of the country. On the Ayodhya issue, one of the noteworthy developments is that the Supreme Court delivered its judgment on the reference made to it. It has upheld the validity of the Acquisition Act, but not the provisions relating to abatement of the pending suits. The disputed area is vested in the central government, which is now to act as a statutory receiver for maintaining the status quo under the disposal of the revived suits. Compliance with the decision of the court is essential. The judgment recognizes the possibility of a resolution of the dispute through negotiations. It is of utmost importance that the improved atmosphere leads to a lasting solution to this dispute, and we collectively ensure that communalism does not vitiate politics. A separate department of J&K affairs has been set up under the Prime Minister. Vigorous efforts have been made to step up the pace of the development and economic activity in the state. Government has ensured availability of adequate funds to the state and will regularly assess its needs sympathetically in terms of the resources required for its developmental needs. The objective of revival of the democratic process is also being pursued. The delimitation of constituencies is being done, and the work of revision of the voters list has been taken up by the Election Commission. Operations against militants are being intensified. The attempts by militants to disrupt the Amarnath Yatra were successfully foiled by the administration. In spite of the trying conditions, the security forces are showing restraint and are sensitive to the feelings of the local people. Delegations of diplomats and parliamentarians visited the state and interacted freely with various sections of the people. This continuing transparency has generated overall confidence. In the Northeast, government is pursuing its policy of dealing firmly with insurgent activities. At the same time, efforts are being made to encourage these disruptive elements to abjure violence and join the national mainstream. The government of Mizoram signed an accord with the Mar People's Convention, resulting in surrender of militants. There has been similar surrender by Ulfa militants in Assam. As an agreement was signed in September 1994 providing for a Jharkhand Area Autonomous Council. A new bill incorporating the provisions of the agreement has been passed by the Bihar Assembly. Government is seized of the issues that have arisen in the hill areas agitation in Uttar Pradesh and is confident that given patience and sympathetic handling by all concerned, acceptable solutions will be found. The National Human Rights Commission
carried on its work with dedication. Government stands committed to its policy of promotion and preservation of human rights. The economic reforms have brought out an upswing in the economy. During 1994-95, the gross domestic product at constant prices is expected to increase by 5.3% as against 4.3% last year. Industrial revival started with an 8% increase in production in the first half of 1994-95. Foreign exchange reserves rose from 15.1 billion on 31/3/94 to over 19 billion in the last week of January 1995. Government was in a position to repay about 1.1 billion to the IMF ahead of schedule. As a consequence of the strong revival of the industrial sector, imports increased by 23.90%. Exports have also grown by 16.9% in dollar terms. The rupee continued to remain stable and was made convertible on current account. Government is concerned about the increase in prices, especially of articles of mass consumption. The price situation is being watched closely and measures are being taken to prevent shortages. In the case of some commodities like sugar and edible oil, prices had risen mainly to insufficient domestic production. The comfortable foreign exchange position has enabled imports to augment supplies and control the rise of the prices. In the case of wheat and rice, open market sales out of public stocks of food grains held by the Food Corporation of India have also been undertaken. The public distribution system and revamped public distribution system are also being used to provide assistance in making essential commodities available. Further efforts will be continued in this direction. Remunerative minimum support prices would continue to be assured to the farmers to safeguard the country's food security. As far as essential commodities are concerned, government will pursue the twin objectives of ensuring adequate availability and fair prices with extra concessions for the poor. The wide-ranging industrial deregulation has evoked commendable response from entrepreneurs. More than 17,000 investment intentions have been filed since July 1991, totaling investment of over rupees 3,50,000 crores with potential for direct employment for 3.4 million persons. Nearly 20% investment intentions have so far been implemented, and another 20% are at various stages of implementation. These are estimated to generate direct employment to the extent of 1.4 million persons. Disbursements by our major financial institutions from April to December 1994 have shown a 39% increase over the same period in the previous year. The growth of domestic initiative has generated interest amongst foreign investors and collaborators. The confidence exhibited by foreign investors in the skills and resources of Indian partners is evident from the large foreign direct investment in joint ventures to the extent of 80%. Cumulative foreign direct investment approvals since 1991 have exceeded rupees 20,000 crores, the bulk of it in long gestation infrastructure projects. Government continued with its policy of reforms and deregulation in other sectors. The new drug policy and the telecom policy are steps in this direction. The small-scale sector is an important component of our industrial base, its production level being rupees 2,41,648 crores and generating an employment of 139 lakh persons. It recorded a growth of 7.1% last year. Exports from the sector are around rupees 24,000 crores, accounting for nearly 35% of total exports. To meet the credit needs of the sector, the Reserve Bank of India had issued guidelines
including the adoption of a single window scheme in 85 districts where small-scale units are concentrated, and setting up of specialized bank branches. Government will enhance support to the sector further through liberal assistance to technology upgradation. A high-power committee under the chairmanship of the Prime Minister has adopted an action plan for revitalizing and improving khadi and village industries and generate additional employment for 2 million persons. A special employment program would be undertaken in 50 selected districts, and intensive development of 125 blocks in the country would be promoted. Employment for the educated youth is a prime concern of the government. The Prime Minister's Rozgar Yojana, which is being implemented from 2nd October 1993, was designed to provide self-employment for youth in the urban areas. It has been now extended to cover the rural areas also from this year. During the current year, 2.3 lakh educated youths will benefit from this program, as against 31,797 last year. Government will provide loan to 7 lakh youths to generate 10 lakh employment opportunities before the end of the 8th plan period. The production of nitrogenous fertilizers is expected to reach an all-time record of 78.2 lakh tons in 1994-95 in terms of nutrients. Production of phosphatic fertilizers is expected to increase from 18.5 lakh tons in 1993-94 to 23 lakh tons in 1994-95 in terms of nutrients. Government has continued with its efforts to increase the domestic production of fertilizers with 5 new plants likely to commence production shortly. Government has continued to give high priority to the development of the agricultural sector. The production of food grains is expected to increase from 182 million tons last year to 185 million tons in the current year. Disbursement of agricultural credit was rupees 15,100 crores during 1993-94 and is expected to reach a level of rupees 16,700 crores during 1994-95. The area covered under irrigation is expected to go up by 2.77 million hectares in 1994, bringing the 94-95, bringing the total area and irrigation to 87.82 million hectares. The consumption of fertilizer nutrients during 1994-95 is estimated at 136 lakh tons, showing an increase of about 10% over the consumption of 1993-94. Government has been promoting diversification schemes in rural areas to provide higher incomes from occupations like horticulture and fishing. Accordingly, the horticulture has been given an outlay of rupees 1,000 crores in the current 5-year plan, as against an outlay of only rupees 24 crores in the last 5-year plan. Fish production, which accorded an all-time high of about 46.8 lakh tons in 1993-94, is likely to reach a level of 47.5 lakh tons during 1994-95. There has been a 3-fold increase in export of agricultural products during the last 5 years. Rural development is a central concern of all the developmental efforts of the government. Sharply targeted rural development programs underpin its employment strategy in poverty eradication. The central plan allocations for rural development schemes have been progressively enhanced during the last 3 years, and the current year's allocation of rupees 7,010 crores is the highest ever in our planning history. The large outlay goes to provide additional wage employment as well as self-employment through mobilization of institutional finances on a large scale. Rupees 5,055 crores go to provide employment through the Jawahar Rozgar Yojana and the Employment Assurance Scheme.
For Employment Assurance Scheme, an amount of rupees 1,200 crores has been earmarked during the current year. The program has been expanded from 1,778 most backward blocks of the country to 2,279 blocks in the current year. In addition to the Jawahar Rozgar Yojana, an intensive JRY program focuses on 120 chronically backward districts. All these schemes together are expected to generate 1,470 million man-days of employment in the current year. The asset-cum-loan-based integrated rural development program, which provides self-employment, would cover about 2 million rural poor households from this year. The district and block level credit plans are being coordinated more effectively, and the average investment per household is being increased to rupees 12,000. Rupees 2,000 crores of institutional credit would be mobilized through a subsidy of rupees 1,098 crores. These programs will increasingly cater for the rural literate youth. Simultaneously, the program for development of women and children in rural areas is being extended to all the districts and will now provide rupees 25,000 against rupees 15,000 hitherto to women's groups to help them pursue economic activities and enhance group action in matters like literacy and family welfare, leading to women's empowerment. As stipulated by April 1994, all states amended their existing Panchayat Raj laws or have legislated new laws. Now it is necessary to hold elections and constitute panchayats at all levels. Some states have already made a beginning. In order to fulfill the high expectations of the people, the panchayats must be empowered with financial and administrative delegation. I call upon all the states to complete the panchayat electoral process without delay. Government recognizes the need for an integrated program to deal with the problems of urban poverty. This program would include scientific disposal of urban waste of all kinds. Voluntary organizations would be fully involved in its design and implementation. Government is seeking to formulate a scheme of 345 Class 2 towns of the country that have populations ranging from 50,000 to 1 lakh. The response from the states to the special component plan for the scheduled castes has been encouraging. The central allocation to states to supplement their efforts this year is rupees 270,085 crores. An important step taken last year was the constitution of the National Commission for Safai Karamcharis to oversee the programs aimed at the liberation and rehabilitation of the Safai Karamcharis. The Commission would address itself to rehabilitation programs such as training, better mobilization of institutional finances, and the need for enhanced unit costs. Efforts to strengthen and expand economic support programs to the poor by the provision of margin money and loans through the National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance and Development Corporation have been stepped up, as has been its authorized share capital from rupees 125 crores to rupees 300 crores. The first step in providing for reservation of 27% for the OBCs under the Government of India was taken in September 1993 and is under implementation. In order to ensure that the full benefits of this measure are available to the OBCs, Government relaxed the standards required for OBC candidates to be on par with the scheduled caste and scheduled tribe candidates, and as a result, 1,873 additional OBC candidates qualified for the Civil Services Preliminary Examinations 1994. Government has also decided to extend the 3 years age relaxation principle and to allow 3 additional attempts.
The National Minorities Commission Development, the National Minorities Development and Finance Corporation became operational in September 1994 with an authorized share capital of rupees 500 crores to promote the economic development activities of the backward sections amongst the minorities and to assist the upgradation of their technical and entrepreneurial skills. An amount of rupees 25 crores has been provided during the current year to the Maulana Azad Education Foundation. The foundation will set up residential schools for girls in low literacy, slum and rural areas. Certain new measures are under consideration of the government for the protection of the scheduled castes and the scheduled tribes and the disabled. These are inclusion of SCs and STs, Prevention of Atrocities Act 1989, and the Protection of Civil Rights Act 1995 in the 9th schedule of the Constitution, setting up of a commission under Article 339(1) of the Constitution to review the development strategies like the tribal subplan and other measures presently in operation for the welfare and development of the scheduled tribes so as to improve upon these strategies, legislation to provide equal opportunities to the handicapped in areas like education, vocational training and employment placements, and a trust for the welfare and protection of the mentally retarded. In matters relating to women and children, government's approach has been to provide an enabling policy environment in which their concerns, particularly those of the girl child, are the central focus of planning. Priority is given to the empowerment of women, support services, and nutrition programs. The noteworthy achievements in this process have been the adoption of the National Nutrition Policy, the setting up of the National Nutrition Council, and the National Creche Fund, and the implementation of the Mahila Samriddhi Yojana. The Mahila Samriddhi Yojana has had an impressive response. By December 1994, 72 lakh accounts had been opened with a total deposits of rupees 6,590 crores. The National Creche Fund will assist in starting 1,800 additional creches by the end of the 8th plan to provide daycare services to 45,000 children of working women and ailing mothers. As part of the effort at covering the entire country with the Integrated Child Development Service Program, it is proposed to cover 1,000 new blocks through community nutrition centers in 1 lakh villages as a first step during 1995-96. To achieve the goal of education for all by 2000 AD, government will progressively raise the allocation of education so as to reach the target of 6% of GDP. Total literacy campaigns are now operational in 312 districts in the country, covering about 50 million learners in the 9-45 years age group. With the emergence of total literacy campaigns, it is now being perceived that universal adult literacy is an achievable task. The government is determined to eradicate child labor progressively in all employments and in hazardous industries by the year 2000 AD. A national authority for elimination of child labor has been set up to coordinate actions of the core sectors of development administration such as education, rural development, women and child development, health and labor to devise integrated programs that would bring about conditions conducive to withdrawal of children from employment and place them firmly in schools. We are today in the forefront in the practical application of the space technology in vital areas. The Polar Satellite Launch Vehicle D2 and the Augmented Satellite Launch Vehicle ASLV D4 demonstrated our capacity to place satellites into polar and near-Earth orbits. Our INSAT class satellites
are providing services in telecommunication, TV broadcasting, meteorology, and disaster warning. The next satellite in the series, INSAT 2C, and the remote sensing series satellite IRS-1C are planned for launch in 1995. It is heartening to note that India has been selected for the setting up of a UN Center for Space Science and Technology Education to cater to the needs of the Asia-Pacific region. To meet the aspirations of the people to view programs in their own language, Doordarshan has reconfigured its satellite service. Out of 14 channels, 11 satellite channels are now exclusively for programs in regional languages. The country continued to make strides in its efforts to harness the power of the atom for peaceful purposes. With the completion of the 6th Indian designed and constructed nuclear power reactor, the second unit of the Kakrapar atomic power station, which achieved criticality on January 8 this year, the country once again proved its self-reliance in this advanced technology. There were also spin-offs from the use of nuclear technology, such as the production of nuclear-grade graphite, fabrication of medical lasers, and development of parallel supercomputers. Our armed forces maintained their vigilance in defending our international borders and maritime interests. They also made valuable contributions in counter-insurgency operations in Jammu and Kashmir and in the Northeast. Abroad, the Army won plaudits for its contributions to the UN peacekeeping effort in Somalia, ably supported by the Indian Air Force and Navy, especially in the de-induction of forces. In the context of international relations, we can view the past year with satisfaction. Existing friendships were reinforced and new understanding created around the world of our objectives and policies. Our continuing support for the United Nations, which observes its 50th anniversary this year, is based on the premise that it is the most effective instrument for the realization of humanity's common goals. India's initiatives at the United Nations included the need for the democratization of the world body and the enlargement of the UN Security Council's membership to reflect contemporary realities. We proposed a 4th special session on disarmament to address the post-Cold War issues of global security. In our own region, we will be hosting the next SAARC summit in April this year and look forward to working with our SAARC colleagues to further strengthen regional cooperation. During the past year, closer bilateral relations with our neighbors continue to secure our attention. We welcome the new governments which assumed office in Sri Lanka and Nepal through multi-party democratic elections. We look forward to closer understanding and increasing cooperation with them as with all our other neighbors. Pakistan has, however, continued on its distressing path of confrontation with India and unacceptable interference in our internal affairs. We have taken repeated initiatives with Pakistan to settle all unresolved issues between our two countries according to the Shimla Agreement. Our offer of such a dialogue still stands. Meanwhile, we regret the unilateral steps taken by Pakistan to close their office in Bombay and the Indian Consulate General in Karachi, thereby creating greater barriers to people-to-people contacts and commercial, cultural, and other relations. The government has worked to consolidate understanding and cooperation with old and new friends abroad. My state visits to Bulgaria and Romania renewed the close ties that have existed for decades between India and the countries of Eastern Europe. Our Vice President visited Australia, South Africa, and China, and the visits reinforced our ties with these countries. The Prime Minister's visits to the United Kingdom, USA, Russia, and Vietnam and Singapore
contributed significantly to all-round enhancement of our ties with them. The visit to the USA, which resulted in greater mutual understanding on matters of concern to the two countries, opened a new chapter in bilateral relationship. It laid the groundwork for resurgent India-US interaction, not only in the political, economic and commercial fields, but in other areas as well. The Prime Minister's visits to the United Kingdom, Vietnam and Singapore testified to our desire to reinforce ties with our European and Asian partners. India-Russia ties gained in substance and momentum during the last year. The Moscow Declaration on the Protection of the Interests of Pluralistic States, signed by President Yeltsin and our Prime Minister, was a notable contribution to the conduct of interstate relations. We recently welcomed President Nelson Mandela of South Africa as the chief guest for our Republic Day celebrations this year. His visit marks a new chapter in the building up of India-South Africa cooperation in various fields. Our efforts to effectively project abroad the success of our economic management, on which depends the well-being of our people, and the beneficial changes that have taken place as a result of economic liberalization, have received excellent response in countries abroad. The momentum gathered by the country through these policies has to be sustained to ensure that the benefits that have started accruing are not frittered away. A combined effort is necessary to strengthen the confidence of investors in our economy and of the people, particularly the underprivileged, in the economic reforms. The tone and tenor of your debates reflect and greatly influence both. I am confident you will set the pace with due regard to these objectives. I commend you to your task and wish you success. Jai Hind.